medical journals. His passion for lifestyle medicine has helped many patients become medicine and disease free. He co-founded the non-profit organization Straight Academy to help people achieve a stress-free and healthy life. Dr. Mutha is also a Jain philosophy practitioner and teacher with over a decade of experience in sharing his knowledge and in life. Thank you, Jain. Welcome to Dr. Mutha. Excuse me, what is third space? That's a very doctor-related question, medical-related question. So inside the GI tract, there is no right? There is food pipe. There is food pipe, right? So inside the food pipe, that's first space. Then somebody cuts you open in the belly, that's second space. But when I'm working inside the wall, make a tunnel inside the wall, and I'm working inside the wall. So think of it like this is your, let's say your stomach, right? You're sitting in your stomach. So this is first space. Outside of the stomach, that's second space. Third space is when I'm working inside the wall itself. And Dr. Tilaksha is here too. He was my partner in Virginia for 7, 8 years there. He actually taught me third space, so he got the master here. He's in Cleveland, by the way. So let's start with Namo Namo Vintam, Namo Siddhanam, Namo Avyayam, Namo Uvasamayam, Esho Esho Panchana Mukharu, Sabhavapanam, Mandalayam Sabdesaru, Paramam Harimam, Ajnanam Kriyananam, Jnanam Janashalakaya, Nekram Unniritam Yena, Tasmai Shri Guru. Some of you were there during the talk at Jain, right? So part of it is going to be repeat for you without a revision second time, but for the others it will be new. So I think how then talk for Jain? Very few actually. Okay, so majority of you were there. So please bear with me those who are there, but you will also get some new stuff very soon. All right. So the talk is one second. Jain diet and lifestyle recipe for disease-free life. All right. So next slide. What do you guys think is a major cause of all sorts of diseases? About 80% of diseases. So go through some slides, and some of you know the answer. Others, those who know can avoid, and others can actually. So genetics, we all think it runs in my family. That's germs, bacteria, diet and lifestyle, global warming, or we don't know. How many of you think genetics, genes? No. Okay. 2. How many of you think germs, bacteria? A few. Okay. Diet and lifestyle? A lot of you. Global warming? One. We don't know. Okay. All right. So majority of you are right. Diet and lifestyle is the cause for 80%, and that's a conservative estimate. There is a lot of people actually think that it's more than 80%, it's close to 90 or even higher than that. And we'll talk about how everything else is impacted by diet and lifestyle as well. So, but majority of our books say we don't know. There might be risk factors. We say this is the risk factor, that is the risk factor. We don't know. That's why we just keep on giving you medicine. All right, next slide. So, question for you: do you know anyone who's on a strict Jain diet and lifestyle, but still has to take medicines for chronic diseases or undergo surgery? Raise your hand. How many of you know anybody who is on Jain diet and still has to take medicines or has to undergo surgery? No? So, how many of you have know people who are on Jain diet and still have medicines? Only 3. I would say Srimad Rajchandra. Srimad Rajchandra what? He had Crohn's disease. Yeah, He was an
Jain diet. Yeah. So everybody of you sounds like majority of you know someone who was in Jain diet and lifestyle and still had some kind of disease, correct? Okay. Yeah. Yeah. All right. So what is the best diet to prevent, treat, or even reverse disease? Jain diet, is it the best diet and lifestyle to prevent or reverse diseases? No? Not sure. Okay. Mediterranean diet? One person thinks so. Keto diet? No? Very popular pieces. Vegan diet? Maybe. Something else. No such thing exists. No, that's right. So there is a lot of mixed opinion. First of all, what is a Jain diet? Who knows what is a Jain diet? So when we say somebody is on Jain diet, what do we say about the Jain diet? No roots. No root vegetables and vegetarian. So they will not have eggs, they will not have meat, they will not have fish, and they will not have root vegetables. That's essentially in our mind is Jain diet, right? Before sunset and don't eat after sunset. So, yeah. Okay. So the answer is something else. There is actually something else that can actually reverse your disease. But our medicine book says that there is no such thing. You know, things are changing, but there is still association. Right? Jain diet, surprisingly, all things, and I think one of the things is a lot of our sadhu Maharaj also are taking medicines or undergoing surgery, so we think, oh, it doesn't work. All right. So this is a case study about quick patient. Next slide. All right. So this was a 39-year-old gentleman who was an IT professional on Jain diet in Bangalore. And one day he started having this pain in his chest. He went to the doctor and they did all sorts of testing for him. What did they find? He was diagnosed with diabetes. He was diagnosed with high blood pressure, high cholesterol. Fortunately, he did not have heart attack, but all of these things were diagnosed overnight. And what did they recommend? A long list of medications to be taken for the rest of your life. He was like, there has to be something else. So he reached out to me. He reached out to me that I need to. I was like, how committed are you taking? He's like, I am very committed. Like, give me 3 months if you're going to do it, we'll be able to work on it. And I recommended lifestyle medicine, therapeutic interventions. I asked him to wait for 12 weeks, but he did not wait. In 6 weeks, he checked his labs again, he checked all of his numbers, and everything was reversed. Diabetes resolved, blood pressure normal, cholesterol normal, he didn't need any medicine. Just took 6 weeks. But I'm generally give 3 months. So what is lifestyle medicine? Lifestyle medicine is a medical specialty that uses therapeutic lifestyle intervention as a primary modality to treat chronic conditions, including but not limited to heart disease, cardiovascular means heart, diabetes, obesity, overweight, and lots of other diseases associated with that. It also provides effective prevention for these conditions. So if you don't have it, that does not mean that I'm okay, I can do whatever. Because we're just waiting for things to go wrong. So potentially you can prevent all of them. Thank you. So Jain way of life. Artithakars were only sign, right? Who all agree with that? Artithakars were only sign, Keval Jnani. I thought everybody would agree. Artithakars are Keval Jnani, right? Yeah, everybody agree. So Keval Jnani means they knew everything, right? So their teachings actually lead us to what? Path of infinite happiness, right? Anant Sukh, right? Infinite happiness. So you cannot be following that path if you're sick. You all agree? If you're sick and ask me to read something, do some jam, do some time, I can be like, I'm hurting what you're talking about. So unless you're physically healthy, you're not going to work on your mental health. Agree on that? Everybody? So how come Kevali Bhagwan gave us some recommendations that is actually not helping us be healthy? Why are we still getting sick even after following the Jain diet? How come the Jain diet cannot prevent or treat
these lifestyle changes. Did we ever think about it for a minute? How is that possible? It's a paradox, right? If you're saying they were many, if you're saying they were omniscient, how come we're getting sick? If we follow his teaching, we should be happy, healthy, physically and mentally to achieve that state of infinite happiness, correct? So, because I think we have misunderstood the Jain diet. Yes. Might come as a shocker, but actually it's all in there. We just have misunderstood it. Alright. So what is lifestyle medicine? There are 6 pillars of lifestyle medicine. One is nutrition, a whole foods plant-based diet. I'll go on what is whole foods plant-based diet. Second is physical activity. Third is stress management, up and down. Fourth is restorative sleep, proper sleep. Fifth is avoidance of risky substances. Sixth is positive social connections and volunteering. Now, I went over all these 6 during the talk over there, but today I'm going to focus on the diet part and maybe a little bit of stress management because of the time constraint. And I was like, I didn't want it to be repetitive for everybody else who attended. At the same time, everybody should learn something of it. So my goal will be to focus on diet today, and second will be on a little bit on stress management. So first one is nutrition. All right. Whole foods plant-based diet. What does it consist of? It consists of fruits, vegetables, beans, legumes actually consist of everything, whole grains, nuts, seeds. It does not consist of fruit juice. It does not consist of dairy products. Obviously, as a Jain, you will never consume egg or egg-related products, or fish or meat. So I don't have to explain it to you all. Even if you go outside, you probably look at the ingredients and you make sure there is no egg. As a Jain, that's a prerequisite, right? So I'm hoping that you guys work on that automatically. I don't have to talk about those things. So it does not include what? It does not include meat or fish or eggs, dairy products, honey, butter, cheese, all of these things, sugar, none of these things. And it does not include, so these are all animal products on the left side, correct? We agree all of them. Honey is animal product, dairy products, animal products, egg, animal product, meat, animal product. All of that is animal product. On the right side, you see oil, sugar, refined flour, sweets, Indian mithai, all the packaged foods like Garli, Gujarat and all, and chips. Yeah? So none of this is included. Suko nasto khavare, no, none of that stuff. No, right? So no cha, no coffee, none of that stuff. Whole foods plant-based diet is whole foods, vegetables, nuts, beans, seeds, whole grains. All right. Okay. So what does Jainism say? Jainism, everybody knows Mahavigya, right? Vigay means जो विकार उत्पन्न कराए वो, जो विगति कराए वो, जो कषाय बढ़ाए वो, जो आपको नरक में लेके जाए वो. That is Mahavigya. Essentially, जो Jain है वो कभी Mahavigya नहीं खाता. That is one prerequisite. So obviously, none of us eat meat, none of us eat eggs, honey, alcohol, and butter. None of us eat mud, mas, madira, makhan. That's Mahavigya. In Shwetambar, in Digambar, they call it makar. Makar. Essentially, both the things are the same. Mud, mas, madira, makhan. Correct? Mud, mas, madira, makhan. Out. Mahavigya. Now, second is Vigai. Vigai क्या है? जो विगति कराता है वो. So what is विगति कराने वाले कौन सी? किसको पता है विगई क्या होता है? What are the 6 things in विगई? दूध, दही, घी, तेल, sugar, good. 6 things, right? So हम तिथि के दिन क्या करते हैं? लीलोत्रि का त्याग करते हैं और पापड़ा. जिससे कषाय बढ़ाने वाले हैं वो तेल वाली चीजें. तो तिथि हम कहते हैं तिथि बड़ी तिथि है और हम क्या करते हैं? जो चीजों से हमारे करने वाले हैं हमें उस दिन प्रतिक्रमण करना होता है. टाइम खुद के साथ आत्मा के साथ स्पेंड करना होता है. हम क्या करते हैं? कढ़ी चाहिए ना, खिचड़ी के साथ तो कढ़ी चाहिए, राइट? और दूसरी तो कढ़ी होती है, वो दूसरी खिचड़ी मुझे पसंद नहीं. तो विवेक खाएंगे
तिथि के दिन, तो कैसे आपको प्रतिक्रमण अच्छा होगा, कैसे आपके कषाय बंद रहेंगे। कषायों का त्याग करना है तो कषाय अंदर तो वैसे स्वाध्याय करना पड़ेगा, बट कषाय पड़े हैं उनको बढ़ावा देने वाली चीजें तो नहीं खानी। सो ये हो गया महाविगई और विगई, which is nothing but what whole foods plant based diet is। कोई डिफरेंस है? दोनों में एग्जैक्ट सेम चीज बताइए। और किसको, सबको पता है महाविगई के बाद विगई कौन से नंबर का तब आता है वो? चौथे 12 तब होते सबको पता है, करेक्ट? 6 बायंतर और 6 अभ्यंतर, एंड दिस सबको पता है। रस क्या चौथा नंबर का, चौथे नंबर रस परित्याग। रस परित्याग में क्या होता है? विगई का त्याग। तो तिथि के दिन नहीं करते, बाकी के दिन तो करते नहीं, और तिथि के दिन भी नहीं करते। और हम क्या सोचते हैं कि मैं जैन डाइट फॉलो करता, तो गड़बड़ कहाँ पे है? अगर हम होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट पे जाएंगे तो क्रोन्स डिजीज का रिवर्स होता है। मैंने रिवर्स किया है, राइट? और काफी डॉक्टर्स ने रिवर्स किया। सो एसेंशियली दैट फूड दैट कम्स फ्रॉम फार्म goes to the factory and then comes to your table is not whole foods। अगर आपके घर से फैक्ट्री में जाके प्रोसेस होके आपके फार्म से फैक्ट्री में जाके आपके टेबल पे आ रहा है, that's something you don't eat। has to come from farm to your table directly। फार्म से सीधा किचन में और फिर टेबल पे। अगर इस तरह से आया तो वो फूड ठीक है। क्लियर? सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है? हमें पता है चलो तेल नहीं खाना, we understand that, शुगर नहीं खानी चाहिए, अच्छी गुड़, कोई भी क्वेश्चन होता है गुड़ तो अच्छा होता है, नॉट गुड। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है डेयरी, तो खाना कैल्शियम मिलता है, बोन स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट? प्रोटीन सोर्स, करेक्ट? देखते हैं। और cow is not your mom, milk is not for you। हम humans are the only species, एक बार माँ का दूध पीना बंद कर दिया, फिर दूसरे स्पीशीज के एनिमल की माँ का दूध पीना चालू। कोई और करता है ऐसा प्राणी दुनिया में? नहीं करता, बट सिर्फ हम ही करते हैं। और हमको तो ऐसा सिखाया गया कि नहीं, इससे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। बट वी हैव सो मच डेटा नाउ, इतना साइंस आगे बढ़ गया है कि हमको सब कुछ पता चल गया कि उससे कितने नुकसान होंगे। तो violence in dairy industry, you all know, but I'm going to talk about the health perspective। So harmful and toxic hormones, दूध में कितने हार्मोन्स होते हैं? नहीं, बट हम ऑर्गेनिक दूध लाते हैं, ऑर्गेनिक दूध में हार्मोन्स होते हैं कैसे? ऑर्गेनिक दूध में तो इंजेक्ट नहीं किया मां को, होता है कैसे? हाँ, नहीं होना चाहिए, अंदर जो अंदर से प्रोड्यूस होता है, yeah, प्रोड्यूस करती है। exactly, mother will produce milk only if she has hormones, otherwise कैसे बनाएंगी, right? So what kind of hormones does she have? Wheat cow और buffalo दोनों में hormones होते हैं। ऐसे नहीं कि अच्छा वो खराब है, वो अच्छा है खराब है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, थायरॉक्सिन, एंड्रोजन और कितने सारे। और आप बटर चीज बनाते तो और भी कॉन्सेंट्रेट होके सारे हार्मोन्स आते हैं आपके। सारे के सारे हार्मोन्स आपके सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। प्लांट्स खाते तो उसमें हार्मोन होता है, उसमें नहीं होता। तो आपके हार्मोन से मैसअप नहीं करते, बट ये हार्मोन आपके हार्मोन की तरह दिखते हैं। आपकी बॉडी सपोज्ड टू hormones when it's right time for you, but here you're putting this every single day at any time। आ गया तो दोपहर में आइसक्रीम खा ली, शाम को दूध पी लिया, रात को सोते वक्त तो फिर एसिडिटी के लिए अच्छा होता है, एक गिलास दूध पी लिया, राइट? वन सिस्टम सुबह दोपहर शाम बिगाड़ रहा है, फिर मेसिंग अप विद आवर ओन सिस्टम। कैसे चलेगा? अगर आप गाड़ी चला रहे हो, बोले नहीं यार मैं रॉकेट डाल देता हूँ, अंदर केरोसिन डाल देता हूँ, डीजल डाल देता हूँ, चलती है पेट्रोल से, राइट? नहीं अभी अच्छा होता है, वो भी अच्छा फ्यूल है, वो तो महंगा वाला फ्यूल डाला मैंने। डीजल इज मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल, राइट? हम ऐसा करते हैं, पेट्रोल ही डालते हैं, हम लोग डीजल डालते हैं, क्यों? महंगा वाला चीज है, अच्छी वाली चीज है, गाड़ी चलेगी ठीक डीजल डालने के बाद।
something that happens to us. Mistreatment of these mothers and calves, and you know what happens. The release of stress hormones such as cortisol. तो already inherent तो होता है, but बछड़े को लेके जाते हैं, फिर कतल खाने चला जाता है. किसी माँ को कोई ऐसा अच्छा लगेगा कि अपने बेटे को, आपके बेटे को किसी ने मारा भी, तो आपको पसंद है? हर्ट भी किया, टच भी किया, तो you're angry. You're taking, snatching that calf away from the mother, and you know what happens later on. How will the mom feel? Is she going to be happy? If she's not happy, what kind of hormone she's going to release? This is all tested. You can check everything. सब कुछ available in literature. So कितने hormones होते हैं उसमें? ये bovine growth hormone जो होता है ना, ये FDA ने, government of USA has approved that you can inject bovine growth hormone into the cattle for production of it. It is approved, legal. उसमें दूध में एक लैक्टोपेरोक्सिडेज करके प्रोटीन होता है, तो आपका थायराइड पेरोक्सिडेज. काफी लोगों को थायराइड की बीमारी होती है, क्या इन सबको घरों में पता नहीं कैसे बोल रहे ऑटो इम्यून, then might be something here. सिमिलर हार्मोन आप कंज्यूम कर रहे हो, फिर बाकी का हम कचरा खा रहे हैं, जो अंदर गट को जो प्रोटेक्ट करने वाला म्यूकस लेयर था उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. ये अपना गट अब इस प्रोटीन को एक्सपोर्ट होता है लैक्टोपेरोक्सिडेज. बॉडी बोलती है फॉरेन बॉडी है, कुछ तो ये अटैक हो गया उस पे, वी हैव टू काउंटर इट. सो इट क्रिएट्स दिस इज कॉल्ड एंटीबॉडी. वो एंटीबॉडी उसको प्रोटेक्ट कर लेती है, जब अपने शरीर में घूमती है तो उसको लगता है इट्स अनदर सिमिलर प्रोटीन, फॉरेन बॉडी, लेट्स अटैक. एंड व्हाट डू वी कॉल दैट एज ऑटो इम्यून डिजीज. बोलते हैं ऑटो इम्यून. देयर इज and they have seen कि अगर आप दूध बंद कर दो तो आपका थायराइड 80% इंप्रूवमेंट, आपके लेवल्स एंटीबॉडी लेवल्स 80% ड्रॉप होते हैं. दिस इज ऑल पब्लिश डेटा. और एंटरोहेपेटिक सर्कुलेशन बहुत फैंसी वर्ड है, बट एसेंशियली क्या होता है, आप खाते हो तो कौन इसको ब्रेक डाउन कौन करता है अपने बॉडी में? लिवर. कुछ भी खाते हो तो मेजॉरिटी सब कुछ लिवर में जाता है, करेक्ट? सो लिवर से ब्रेक डाउन होके वो गट में कैसे जाता है? एक बाइल करके लिवर बाइल बनाती है. तो इस सारे जो प्रोडक्ट्स से आपके इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, राइट? आपके इंटेस्टाइन में चले गए, और उसको बाहर कौन निकालता है? फाइबर. फाइबर
It's so hard to find बिना दूध के products. 99% चीजों में दूध के प्रोडक्ट है. मुझे काफी बार नॉन इंडियन रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना पड़ता है just because they don't have anything that would be Jain legal. Because we are so used to consuming that. और हमको मैं सिर्फ एक कप चाय पीता हूँ. नहीं. आपको पता भी नहीं है आप कितना कितना दूध दिन में पी रहे हो. It's just no end to it. Non-stop चल रहा है. किसी ना किसी दूध का प्रोडक्ट किसी ना किसी फॉर्म में non-stop आपके पेट में आ रहा है. और अब तो इसमें सैचुरेटेड फैट होता है दूध में, तो क्या होता है? ओबेसिटी, डायबिटीज. क्या होता है? ये फैट जाके आपके मसल में चला जाता है और वहां पे एक लेयर बना देता है. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको. इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और उससे आपको दवा लेनी पड़ती है डायबिटीज. और पता है आप अगर उपवास करोगे तो सबसे पहले वो फैट मान सकते, तो जिसको डायबिटीज है उसको सबसे पहले उपवास करना चालू करना चाहिए. उपवास करो, फिर छठ करो, फिर अठूट करो, फिर अट्ठाई करो, और फिर आपका डायबिटीज कैसे चला जाएगा? यू विल बर्न ऑफ दिस फैट एंड नाउ यू विल बी मोर इंसुलिन सेंसिटिव. और आपको दवा लेनी पड़ेगी. ये तो फैट बट द ट्रुथ. Milk has passed 135 million plus cells. Mobile growth hormone जो हमने बोला था. Antibiotics काफी बार मॉम को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं काउस को, so they don't get infected or there are many times patients को उनको इन्फेक्शन हो जाता है. ये सारा एंटीबायोटिक दूध में आ रहा है, आपके अंदर आ रहा है, आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है. They are not in very healthy conditions many times, so feces आया है उसमें. कोलेस्ट्रॉल तो होता ही है, सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लांट प्रोडक्ट में कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है. ये ध्यान रखना. फैट भी बहुत है, फैट भी बहुत है. ये एक थियरी डॉक्टर कॉलिन कैम्पबेल कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने देखा कि जो भी जिसको भी उनके बोन्स एक्चुअली वीक हो रहे थे, उनको लगता था कि बहुत स्ट्रांग है, बट जो दूध लेता है वो दूध का प्रोडक्ट एसिडिक प्रोटीन जो है वो आपके बोन्स को लीच करता है, क्योंकि अगर एसिडिक वस्तु आपके पेट में जा रही है तो फिर भी बफर्ड न्यूट्रल करना पड़ता है कि हमारा पीएच. तो it leaches calcium off of your bones and makes your bones actually weaker. तो 6 कंट्रीज का देखा, 6 कंट्रीज में wherever there was higher dairy consumption, there was higher likelihood of osteoporosis, मतलब weaker bones or fractures, including yeah. So हमारे मन में क्या है? दूध से तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बचपन से हमको सिखाया, हमारी गलती नहीं है, बट एक्चुअली क्या होता है उससे? ब्रेटल. तो डेली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मैंने बताया आपको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ह्यूमंस में बढ़ रहा है. सैचुरेटेड फैट दूध में होता है और एग में भी होता है, लेकिन एग इज पार्ट ऑफ इट. आई एम प्रीटी श्योर दोनों की गलती है. ये बात ट्राइमिथाइल एन ऑक्साइड बहुत फैंसी वर्ड है. एक प्रोडक्ट बनता है, एक कंपाउंड बनता है. किससे बनता है? अपने गट में, अपने इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया, उससे ये प्रोडक्ट है. उससे क्या होता है? तो आप जो खाना खाते हो, जनरली मिल्क प्रोडक्ट्स की बात चल रही है, बट एग्स लो, फिश लो, मीट लो, इनमें ये TMAO बनाने के लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए होता है, इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, ये सारा एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है. बीट फिश, बीट मीट, बीट एग्स भरा हुआ होता है, भर भर के, और वो आपके गट में जाके उसको TMAO बना देता है. अच्छा, TMAO बन गया तो कौन सी बड़ी बात है? What does it do? Next one. It doubles the risk of your heart disease straight away. Impaired kidney function, increased risk of cancer. यहाँ तक कि जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर किम विलियम्स, उन्होंने कहा कि कुछ आपको समझ में नहीं आया ना, सिर्फ ये TMAO की वजह से आप दूध और थायराइड. This was an African American doctor, cardiologist, head of American College of Cardiology. He said, if you understand this concept, if you want to avoid risk of heart disease, just for this reason itself, stop drinking milk. अभी तो कितने सारे reasons देखे हमने, but just for this reason itself, stop drinking milk. Allergies and inflammation. One of the single most common factor, or two most common factors for allergies are egg and milk. Two most common, egg
व्हाइट जो होता है, एक में दो चीज होती है, येलो येलो होता है और व्हाइट उसको सराउंडिंग होता है, and that surrounding white protein, that is the bigger cause of allergies, all sorts of allergies. So milk products contain egg white. Milk products and egg white contain these proteins that can trigger allergies and inflammation, leading to symptoms such as rhinitis, eczema, arthritis. तो आपको लगता है ना कि आर्थराइटिस के लिए दूध अच्छा है? भाई आप जो खा रहे हो उसकी वजह से आर्थराइटिस हो रहा है। आप देखो कितने लोग आप जानते होंगे पूरी लाइफ सब कुछ किया, ऑयल लिया, दूध लिया, और नी रिप्लेसमेंट किसको आई कि नहीं? सब लोग जानते हैं ऐसे लोगों को। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट्स डेफिनेटली नॉट प्रोटेक्टिंग। ये गलत मान्यता आप छोड़ देनी चाहिए, राइट? रखनी नहीं है। ये जो है एस्मा, राइट, आप लोगों को सर्दी का प्रॉब्लम होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है। मुझे खुद को 30 साल तक आई सफर्ड फ्रॉम राइनाइटिस, नॉन स्टॉप एलर्जी प्रॉब्लम। इतनी दवाई खाता था, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। वंस आई क्विट ऑल ऑफ इट, आई रेयरली टेक एंटी एलर्जी मेडिसिन। रेयरली मतलब मुझे याद नहीं लास्ट टाइम मैंने कब दी थी। सारे मेरे मेडिसिन एक्सपायर होके मैंने फेंक दिए कुछ सालों पहले। हाँ, 2-3 एपिसोड होंगे साल में, बट कंपेयर टू व्हाट आई सफर्ड थ्रू एवरी सिंगल डे, नॉन ऑफ इट। अभी हमारा सेंसिटाइजेशन हो गया है तो थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा, बट वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग अप नेक्स्ट जनरेशन वेयर दे डोंट हैव टू गेट एक्सपोज्ड टू ऑल ऑफ दिस। तो ये सब बचपन में ही चालू हो जाता है, बड़ा होने के बाद नहीं। हमको लगता है बच्चा ऐसा कुछ चलता है, उनको चाहिए ग्रोथ पूरी होगी, बढ़ रहे हो, प्रोटीन चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो ऐसा गलत सलत सोच के उनको ये खिलाना है, एंड वी आर रूइनिंग देयर हेल्थ। हार्ट के भी प्रॉब्लम स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 9 और 10, जब आपके हार्ट के आर्टरीज ब्लॉक होना है, उसमें फैट बैठना एट द एज ऑफ 9 एंड 10। मतलब 10 साल के बच्चे को भी वी आर गिविंग फैट प्रोडक्ट्स। कितना को लगता है कैल्शियम डेयरी से मिलता है? अरे अच्छा, एक सोचो, काऊ ने क्या खाया? व्हाट इज काउस फूड? ग्रास, प्लांट्स का। तो उसको इतना कैल्शियम मिला कि शी बिकेम अ 450 पाउंडर strong. She delivered a 50-pound baby strong and gave milk on a daily basis, liters and liters of daily basis on a daily basis, जिसमें कैल्शियम है। उसको कैल्शियम वो तो खुद से तो नहीं बनाया ना, कहीं से आया तो तो कहाँ से आया सब कुछ? और आपको क्या लगता है कैल्शियम किसमें? Let's compare next slide. There is associated with the bones, हमने देखा 6 घंटे का डेटा मैंने बताया आपको, मोर ऑफ प्रैक्टिस। तो व्हाट स्ट्रेंथेंस द बोन्स? एक्चुअली एक्सरसाइज। आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करो, उससे ही बोन स्ट्रांग होते हैं, और कोई रीजन नहीं है। हम दिन भर अपने शॉप में बैठते बिजनेस करते, आईटी की जॉब करते, या तो बिजनेस करना और अपने नी रिप्लेसमेंट करती है, और वहां पे एथलीट्स है वो पूरा सब कुछ करते हैं, उनको नी रिप्लेसमेंट नहीं होती, और डॉक्टर क्या बोलते हैं, भाई आपको वेयर एंड टेयर हो गया। वेयर एंड टेयर यूज क्या पे किया मैंने? वेयर एंड टेयर कैसे हो गया? बिकॉज we are consuming wrong things and we are not doing what we are supposed to do. एक्सरसाइज करना चालू करो, बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे। विटामिन डी चाहिए, सनलाइट में जाओ सुबह शाम, टेक गुड इनफ सनलाइट, so you'll get vitamin D which is essential. Make sure your bones don't become weaker. अच्छा, मैं बताऊं कि मैं कैल्शियम किसमें, आपको डाउट आएगा ना, क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने एक स्लाइड रख दी। बादाम, तो ऊपर देखो 100 ग्राम ऑफ दूध अगर आप 100 ग्राम लेते हो तो उसमें कितना कैल्शियम है? 120 मिलीग्राम। 120 मिलीग्राम होता है कैल्शियम किसमें होता है? 100 ग्राम ऑफ दूध में 120 मिलीग्राम। आप देख रहे हैं 100 ग्राम ऑफ बादाम 230 मिलीग्राम, 100 ग्राम ऑफ उड़द दाल 154 मिलीग्राम, 100 ग्राम ऑफ रागी 344 मिलीग्राम, 3 टाइम्स। तिल 1000 मिलीग्राम। 100 ग्राम मतलब आप 10 ग्राम लोगे, 10 ग्राम तिल, तो इतना मिल जाएगा जितना दूध 100 ग्राम के दूध में आ जाए। तुलसी के पत्ते बचपन में खाते थे, कितना आता है तुलसी में? नेक्स्ट स्लाइड में वो बताइए। कड़ी पत्ता जो होता है, कड़ी पत्ता, कड़ी लीव्स, वो सब डालते हैं। कड़ी पत्ता में कितना होता है? 100 ग्राम ऑफ कड़ी पत्ता 3 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, 7 टाइम्स 100 मिलीग्राम दूध। जो आप डेली खाते हो, डेली आप पगार में डालते हो, कटके में डालते हो, चौक में डालते हो, आप पाउडर बनाओ करी लीव्स की,
बनता है, एक बार झाड़ आपने लगा दिया, बहुत सारे पाउडर बनाओ, एक स्पून खाओ एवरीडे, मोर देन इनफ कैल्शियम टू बिकम स्ट्रांग। समझ मानने का है दिमाग में। टोफू, काला चना, राजगीरा, 500 मिलीग्राम, आप जितना चाहिए उतना कैल्शियम मिलेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ खाना खाना है, कैल्शियम की चिंता नहीं करनी। सही खाना खाओ, मोर देन इनफ कैल्शियम यू नीड। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कैल्शियम का भूत अपने दिमाग में इतना चढ़ा है, डेली कैल्शियम खाते रहते हैं। एक्चुअली जो कैल्शियम सप्लीमेंट है दैट इज शोन समटाइम्स टू एक्चुअली डिक्रीज योर लाइफ स्पैन, तो इट डज नॉट नेचुरली। जो कैल्शियम रिच फूड है वो खाओगे तो आपका कैल्शियम फायदा होगा, बट आप सप्लीमेंट विल हर्ट, सो बी माइंडफुल। दूसरे जो है, हाँ, करी लीव्स, तुलसी, वो मैंने बता दिया आपको। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, तुमको पता है, क्योंकि काउ ईट्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड गेट्स इनफ कैल्शियम, यू कैन जस्ट दैट। नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये भिंडी में भी कितना है, भिंडी नहीं बनाते, तुलसी के पत्ते, ठीक है, कितने 100 मिलीग्राम, तुलसी के पत्ते में 2240 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, 20 टाइम्स। से दूध की जरूरत पड़ी आपको कैल्शियम के लिए। जीरा 931 मिलीग्राम, सो जो आप खाते हैं ना, सो 930 मिलीग्राम। अभी कितने और एग्जांपल दो, बहुत सारे। सब्जियां भी जो तत्परिया होता है 2400 मिलीग्राम, कितना हुआ, कन्विंस कर दिया मैंने आपको कि नहीं? अभी कन्विंस हो सब, दूध की जरूरत नहीं है कैल्शियम, कभी मत बोलना कि दूध चाहिए मुझे कैल्शियम चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो एजिंग आप देखोगे, once you got whole foods plant based diet, one of the things you will notice is you start feeling, और लोग भी बोलेंगे आप कितना यंग दिखते हो, लगते ही नहीं आप इतने ओल्ड, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट्स में क्या होता है, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, एजीई बोलते हैं उसको, और नाम भी कैसे है, ये प्रोडक्ट्स आपको एज कर देते हैं। आप जितने यंग हो, आपको ओल्ड दिखाने का काम ये करेंगे, और आपको यंग दिखाने का काम अगर ये आप निकाल दो तो ये कहां से आता है ये चीज? मीट, चीज, बटर, क्रीम चीज जो हमें बहुत पसंद है, थोड़ा बहुत लेते हैं। चीज तो हर चीज में, खाकरा भी चीज का होता है, तो चीज के खाकरे, चीज का क्या नहीं, सब कुछ पागल हुए चीज के पीछे। अरे चीज इज द वर्स्ट, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट, एब्सोल्युटली द वर्स्ट थिंग, क्योंकि चीज इज 70% of its calories come from saturated fat, which is absolutely bad for you. Plus it has this morphine like product which is going to make you addicted, plus it has ton of salt, plus it has concentrated hormones, कितना दो आपको, प्लस जैन धर्म में चीज खाने की मनाही है। फ्राइड एग्स, मार्जिन, मेयोनीज, देखो ऑयल और फ्राइड फूड्स में भी एजीज होते हैं, जो हमें पसंद है ना, पापड़ा जलेबी मिल जाए तो काम, चिप्स मिल जाए तो थोड़ा आराम रहता है, राइट? ट्रैवल कर रहे हैं, अभी बाकी का कहाँ लेके फिरेंगे, घूमेंगे, राइट? तो चिप्स हो तो अच्छा होता है, राइट? इजीली कन्वीनियंट। नहीं, केला ले लो, इट्स वेरी इजी, 2-3 केले खा लो, क्या प्रॉब्लम है उसमें, राइट? इजियर, चीपर, नाइसर, यू कैन बाय वेरेवर। Highly processed products also contains high levels of AGs. अगर आपको लगता है कि मेरी स्किन को बहुत रिंकल हो रहा है, तो बोटॉक्स करने की जरूरत नहीं है, टेंशन कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, पैसा बचाने की जरूरत है। ये गलत सलत चीजों में पैसा खर्च है और प्रोटीन जाके हेल्दी फूड्स खाने हैं। वीडियो चलाएंगे बाद में, मैंने बता दिया इसमें एसेंशियली डॉक्टर बर्नार्ड इज ट्राइंग टू टेल यू कि जो आप चीज खाते हो, दूध के प्रोडक्ट्स लेते हो, केजिन करके जो प्रोटीन होता है, अपना शरीर उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको केसोमॉर्फिन करके एक बाय प्रोडक्ट है, उसमें बनाता है। इट इज वेरी एडिक्टिव। तो भी एक बार चीज खा, चीज बंद करने का मन नहीं। बच्चों को देखो, आप चीज दो तो दे वोंट स्टॉप, दे वांट टू हैव मोर एंड मोर। जो बच्चा कुछ नहीं खाता है, उसको चीज दो तो दिन भर चीज खाता रहेगा। तो इट गोज एंड ट्रिगर्स द सेम सेंटर, जो नार्कोटिक ड्रग्स है ना, वो भी जो सेम सेंटर ट्रिगर करते हैं, वही ट्रिगर ये। इट इज नॉट वेरी हाई, इट्स नॉट एज इंटेंस कि आपको ब्लड में डिटेक्ट अरेस्ट हो जाओ, बट इट्स गुड इनफ टू कीप यू। उसमें और एक प्रोडक्ट है मॉर्फोसेप्टिन। द पॉइंट इज इट्स वेरी एडिक्टिव, दैट्स व्हाई किड्स आर लविंग इट, एंड दैट्स व्हाई यू। बच्चों का क्या कहना, बड़ों को भी यार चीज छूटना, सब कुछ है बट चीज बहुत डिफरेंट। जैसे चाय एक अनदर चैलेंज है ना, वैसे चीज इज अनदर चैलेंज। ची और ची, चाय और ची, बिग प्रॉब्लम।
Next, protein. प्रोटीन का तो चला लेते हैं एक वीडियो, एक इंटरनेट, वी हैव इंटरनेट, एक प्रोटीन का वीडियो देख लेते हैं. जस्ट there's a lot of problem that they can see दूध में तो प्रोटीन होता है, so let's learn a little bit. Let's take a minute and understand that too. There's a condition that we diagnose called protein anxiety. The patient has never had a protein deficiency, but is worried about getting enough protein, is not quite sure what protein is. So, the protein requirements, the recommended daily allowance, if we're looking in pounds, it's about 0.4 grams of protein per pound of your body weight. If you're thinking metric, it's about 0.8 grams per kilogram. So for a woman, call it 46 grams a day. For a man, maybe 56. There's a margin for error. Most people would get by perfectly fine on less than that, but that's a good recommendation. So if you're not eating meat or you're encouraging the patient to get away from it, are they going to get protein? Well, the amazing thing is a lot of foods have protein. Let's say I eat a 2,000 calorie diet and all I ate tomorrow was broccoli. That was all I ate. I would get 146 grams of protein. If all I ate the next day was lentils, I was getting 157 grams of protein. All was corn or all I ate was oatmeal, I still get a lot of protein. Even if all I had was mashed potatoes, there wasn't, and I threw the skin away, you still get a, I'm not recommending that you do this, and I can hear you saying, but essential amino acids, there's an issue there. And you remember this list from medical school? You are lying. You don't remember this list. And there's a reason you don't remember this list. You have never seen a case of threonine deficiency. You haven't seen it. Nobody came in really low on vapor. And the reason is the essential amino acids are found in plant foods too. And normally we always ask for, patients are not going to become protein deficient. It just doesn't happen. And putting vegan diets typically or exceed protein intakes as long as you're eating food, as long as you're eating enough calories, and that's also true for athletes. So athletes need more protein. They need more food, and protein comes along with it. So the old notion that I grew up with in Fargo, North Dakota was your protein foods, meat has protein, but the rules other things don't have protein at all. The thing, other foods have protein, vegetables have protein. Beans have protein, grains have protein. If you took the meat off the plate, they're still going to put adequate protein, especially in calories. So, what is this? What is this? This is air. So, where do you get your oxygen? If you take a sample of air, it's about 21% oxygen, the rest is nitrogen. And now if I get breathing, wait. If you're an athlete, you can breathe more. So protein, oxygen, you eat, and you're not going to become protein deficient unless you're eating nothing but candy all day. And then you've got lots of other problems. Okay? कितना को समझा वीडियो? What he's trying to say is कि हमारे दिमाग में देखिए, हमारे दिमाग में क्या था? जो प्रोटीन है ना, उसके दूध चाहिए, तो फिर प्रोटीन नहीं मिलेगा। और तब भी आने लगी आमिर खान की, और पता चला कि भाई वेजिटेरियन डाइट में कुछ प्रोटीन है ही नहीं, और उसमें भी दूध छोड़ देगा तो बात खत्म। फिर तो हमारा बच्चा बड़ा कैसे होगा? And that's corn oil, peanut oil, safflower oil. So visually, it's really easy to tell. You have to send it to the lab. And then there's one last type that's trans. So हमको क्या लगा कि भाई वेजिटेरियन से दूध से प्रोटीन आता है, अगर वो दूध भी बंद कर देंगे तो बात खत्म। दंगल मूवी ने तो सबका एकदम कंफर्म कर दिया सर कि भाई अगर देखेंगे, अगर एथलीट बनना है तो you will have to eat some animal products. It's not true. That is absolutely not true. Actually, athletes all around the world are not only doing well but excelling in their performance जब वो whole foods plant based diet पे जा रहे हैं।
और ऐसा एक नहीं, हर तरह के फील्ड में और हर तरह के कॉन्टिनेंट में, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में हो रहा है या यूएस में हो रहा है, यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, यू गो टू यूरोप, यू गो टू रशिया, wherever you go, these athletes are excelling in their after going on plant-based diet. So there is absolutely no such thing. सिर्फ बेरीज खाओ, सिर्फ कॉर्न खाओ, सिर्फ ब्रोकली खाओ, फिर भी आपको जितना प्रोटीन चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा। और ये जो 56 ग्राम प्रोटीन जो है ना, वो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, उन्होंने ऑलरेडी 30% मार्जिन रखा था जब ये गाइडलाइंस बनी थी। अगर आप गाइडलाइंस में जाके देखोगे तो दे गिव अ मार्जिन ऑफ एरर ऑफ 30%। मतलब क्या, जितना चाहिए उससे 30% ज्यादा रिकमेंडेशन उन्होंने रखी। इट इज नॉट मिनिमम, इट इज रेकमेंडेड, इट इज नॉट मिनिमम अलाउंस दैट यू नीड, इट इज रेकमेंडेड। 30% मार्जिन रखी, मतलब उतना आपको चाहिए भी नहीं, फिर भी उन्होंने उतना नंबर रखा। और उसमें भी हमको क्या लगता है कि जो मैं खाना खा रहा हूँ उसमें तो नॉट ट्रू। ये थोड़ा सा वीडियो ग्लिची था, बट होपफुली आपको पॉइंट समझ में आ गया हो कि you don't need to worry about protein, don't need to worry about calcium, but actually worry about the ill effects of dairy. दूध के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं सिर्फ हेल्थ के स्टैंड पॉइंट से बता रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। और हम में से हमको पता है, इधर हम खुद दवा पे है, हमारे पेरेंट्स दवा पे है, कुछ ना कुछ फैमिली मेंबर कोई ना कोई, either they are suffering from some disease and we are still giving them every morning what, 1 cup of टी, चाय इतना तो लेते हैं। और बाद में पता चलता है घी तो हर रोटी पे लगता है, फिर बाद में चला कड़ी बनती है, कभी पनीर, कभी बटर, कभी बाद में बटर ठीक से तो हमारा काम नहीं चलता, उतरते ही निकले। हम क्या कर रहे हैं, we are ruining our lives। और भाई जैन डाइट से कुछ हो नहीं सकता, तो ये महाविजय और विजय का कॉन्सेप्ट कहाँ पे, सबसे पहले वही बताया, महाविजय को छोड़ो और विजय को छोड़ो, दैट्स व्हाट जैनिज्म सेड। वो बोल रहे आपको कि आप प्रॉपर जैन डाइट को समझो, सबको दवा खरीदनी पड़े, और दवा कितनी वायलेंट होती है सबको पता है ना, insanely violent, it has violent ingredients plus the process of making it is insanely violent। से जैन की दवा, so violence of जो इसका जो वायलेंस है ना, अभी आप रीड कर सकते हो, दूध में कितना वायलेंस है। जैना किसने फाउंड की थी, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैना, चित्रभानु जी। उन्होंने सुशील 1990s में चित्रभानु जी को पता चला कि दूध में कितना वायलेंस है, तब से वो एडवोकेट कर रहे हैं जैना को कि पूरा वीगन बन जाओ, दूध छोड़ दो। 1990 से, आज की बात नहीं है, 33 years ago he has been asking। यहाँ तक कि जैना ने टीम भेजी इंडिया और देखा सब कुछ पर्सनली, हाँ ये न्यूज़ आ रहे थे, पर्सनली सेंड अ टीम डाउन टू सी कि किस तरह से वायलेंस हुआ है, एंड दे रियलाइज्ड इट्स tremendously violent in today's day and age। Dairy industry is insanely violent। Not just that, Jaina published a book for Pathshala students called Compassion, Book of Compassion। कितने Pathshala टीचर याद है? No Pathshala teacher, nobody। कोई Pathshala टीचर यहाँ पे Pathshala चलाता है? They are all good, okay। तो आपको पता होगा, अगर आपको अभी टीचर को पता नहीं तो आप सबको अभी पता चलेगा। There is a book of compassion। We used to teach this book in Virginia 7-8 years ago। This book has been published long time ago। They have published all the gory details। Unfortunately, इतना sad situation है, they published everything कि कितना वायलेंस होता है दूध में, कब, इतने साल पहले, किसने, जैना। अभी जैना करके रहा हूँ, वीगन का टेबल खाली पड़ा है, सबको दूध चाहिए, छाछ के सिवा कैसे चलेगा, इतनी गर्मी है, फिर कड़ी चाहिए, फिर रात को आइसक्रीम खानी, और बाद में एसिडिटी बहुत होती है, एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, कैसे चलेगा। हम यार देखो, अगर आपका घर में नल खुला रहेगा और नीचे पानी गिला हुआ है किचन में, तो आप क्या करते हो, किचन साफ करने बैठते हो, क्या करते हो सबसे पहले, नल बंद करेगा, नल बंद करते हो ना। तो यहाँ पे क्यों गड़बड़ कर रहे हो, जहां से प्रॉब्लम आ रहा है वो नल बंद करना नहीं है, हमको सिर्फ नीचे का साफ करते रहना। और मैं इतनी दवा खा रहा हूँ, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, बट कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। क्यों नहीं लग रहा है, नल बंद करना महावीर स्वामी ने बताया, ये किसी और ने नहीं, महावीर स्वामी ने बताया। कब बताया, हजारों साल पहले। और उसके पहले उसके पहले इन्फिनिट ईयर्स। सब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, हम क्या कर रहे हैं। वायरस, अगर आपको अभी भी कन्विंस नहीं हो रहा,
टॉपिक क्या है? डेली डिस्कोर्स एंड वी आर टॉकिंग कि आपको जितनी चाहिए थाउजेंड तुम्हारे कुछ ही लिखे ईटिंग योर लाइफ यू लुक एट इट देयर इज इनसेन अमाउंट ऑफ डेटा आउट देयर टू टेल यू कि सीरियसली कितना वायलेंस है दूध में। और हम जैन हैं, अहिंसा के पुजारी, अहिंसा का पूरे दुनिया को हमने अहिंसा धर्म सिखाया और हम उसके पीछे रह गए। क्या हो गया हमको? नेक्स्ट हम क्या कहते हैं? अवॉइड डेयरी। डेयरी प्रोडक्ट्स आप बंद करोगे ना, मेजॉरिटी मिठाइयाँ बंद हो जाएगी, सारी मिठाइयाँ डेयरी मेजॉरिटी। आइडियली विजय का त्याग करो, डेयरी ऑयल शुगर डेयरी सब कुछ बंद, सब कुछ बंद। और देखो आपके वेट लॉस नहीं हो रहा है, वेट लॉस चालू हो जाएगा। अगर आपको इलनेस रिवर्स नहीं हो रही, इलनेस रिवर्स हो जाएगी। ऑफ कोर्स बाकी के तब भी होते हैं साथ में, वो भी करने हैं, बट ये करोगे ना आपको इतना इंस्टेंट रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा, यू विल बी अमेज्ड। सिर्फ इतना करने से you will be able to get rid of these medications which you've been taking for years every single day। और उसके साइड इफेक्ट के लिए और एक दवा, उसके साइड इफेक्ट के लिए और एक दवा, उसके और एक दवा। Before you know it, you're carrying a pill box। सुबह का अलग, दोपहर का अलग, शाम का अलग, फिर भूल जाते हो, कभी 2 ले ली, कभी 1 ले ली, कभी याद नहीं रहता है। और फिर उसके साइड इफेक्ट से क्या होता है? इतनी दवा खाने के बाद भी अनईजी, अनहैप्पी, अनहेल्दी। हाँ ग्रांटेड कि भाई मैं तो सब कुछ खाता पीता हूँ, मैं तो चाय भी लेता हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कहने वाले मिले। भाई आप देखोगे कि 90 ईयर ओल्ड, 95 ईयर ओल्ड सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं और फिर भी फाइन है। सो पीना चाहिए। कैंसर हो गया तो हम क्या बोलेंगे? भाई वो स्मोक करता था ना, उसकी वजह से। नहीं हुआ तो ऐसा बोलेंगे अरे उसको स्मोक करके कैंसर नहीं हुआ, इट्स नॉट द स्मोकिंग, इट मस्ट बी समथिंग एल्स। ऐसा कहते हैं हम लोग कभी। कैंसर हो गया तो बोलेंगे स्मोकिंग की वजह से हुआ, ऐसा नहीं कहेंगे भाई उसको नहीं था स्मोकिंग करके भी, मतलब स्मोकिंग इज नॉट द कॉज। तो जिनको नसीब से भगवान ने 10-15% लोग ऐसे होते हैं जिनके जीन्स इतने स्ट्रांग होते हैं, ओनली 10 to 15%, कि वो सब कुछ अब्यूज करते हैं बॉडी को, फिर भी देयर बॉडी इज एबल टू फाइट इट ऑफ। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? वी आर वेटिंग फॉर सम कि भाई मुझे नहीं है, दूसरे को होगा, मेरे लिए तो चलता है। नहीं, because it's not about age. We diagnose serious illnesses in teens, 20s, 30s, 40s. कोई एज ग्रुप बच्चा नहीं है अभी, nobody is spared। और माँ अगर गलत खाती है तो बच्चे को जन्म से खाओ। There is all of these are separate talks in itself। इतना डेटा है वहाँ पे करने लायक चीज है, इतना वायलेंस है डेयरी इंडस्ट्री। तो अवॉइड डेयरी एट टेंपल, अगर कितना इजी है। हम क्या करते हैं? डेयरी टेंपल में कहाँ पे लगता है? प्रक्षाल अभिषेक में लगता है, राइट? जल पूजा होती है, दूध पूजा नहीं होती। बट वो क्षीर सागर की तरह दूध सफेद दिखना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं? थोड़ा सा दूध डालते हैं। अब वर्षितम का पारना कौन सा दिन होता है? हाँ, आकाश होता है। किससे अभिषेक करते हो? शुगर केन जूस से अभिषेक करते हो। मतलब यू कैन यूज समथिंग एल्स besides of milk to do अभिषेक। कर सकते हो ना? ऐसा कैसे कर सकते हैं? आलमंड मिल्क से करो, फ्रेश बनाओ करते। दूध ही करना है आपको, आलमंड मिल्क करो, कोकोनट मिल्क करो। There are lots of other options. Why do you need to use such violent products? तेल भी चला सकते हो, घी भी चला सकते हो, दिया जलाते हो आप। Why do you need ghee in it? You can use oil, can you not? अगर हम एग्जाम्पल रखेंगे, जैनिज्म इज इक्वल टू अहिंसा, करेक्ट? एवरीबॉडी एग्रीज ऑन दैट। हाउ कैन वी डू वायलेंट स्टफ, राइट? सो इट्स सच एन इजी चेंज। और किचन में आज आपने जो खाना खाया उसमें दूध था, अच्छा था। बहुत सारे ऐसे रेसिपीज आउट, यू कैन प्रोड्यूस, यू कैन मेक ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू कुक ऑन अ डेली बेसिस विदाउट दीस प्रोडक्ट्स। Without these products, you can make all of these good। क्योंकि हमें टेस्ट है ना, सब कुछ होने के बाद टेस्ट की वजह से करना पड़ता है। डेवलप हो जाता है और नॉट नेसेसरी, बट ये कभी कभी उससे भी अच्छा टेस्ट करने वाला फूड है। बट हमें कभी ऐसा लगता है कि भाई जो आलू प्याज नहीं खाते, आलू प्याज की वजह से टेस्ट नहीं आ रही, इसके लिए चलो आज आलू प्याज खाना चालू करिए। हम कहते हैं ऐसा कभी? हमको पता है उसमें अनंत का चीज है। हम कभी ऐसा कहते हैं कि भाई यार शुड से, बट एग नहीं डालेंगे तो कंसिस्टेंसी नहीं आती एग, तो एग तो केक में एग डाल देते हैं। ऐसा करते हैं हम कभी? नहीं करते ना। आई होप कोई नहीं करता है सर।
तो कोई नहीं करता है क्योंकि पता है उसको वायलेंस, तो ये दूध का एक्सेप्शन। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। Is that okay? All right. So I think we need to go back. My appeal to you all. कुछ नहीं तो खुद के हेल्थ के लिए, फैमिली के हेल्थ के लिए घर से दूध, तेल, शुगर को निकालो। क्या है ना? हाँ, तो दूध जब मैं बोलता हूँ दूध में सब कुछ आ गया, हर चीज मुझे बोलने मत लगाओ। चाय चलेगी क्या, छाछ चलेगा क्या, घी चलेगा, बटर चलेगा क्या, चीज चलेगा क्या, क्रीम चीज चलेगा, टावर क्रीम चलेगा, सब कुछ आ गया। अगर वो दूध से आया क्या? सिंपल क्वेश्चन, अगर ये प्रोडक्ट दूध से बना है क्या? इफ द आंसर इज यस, देन यू नो व्हाट यू शुड डू, चक इट। हाँ, घर पे बनाओ, फ्रेश होल फूड्स होना चाहिए। बाहर से कुछ भी आपने खरीदा उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इमल्सिफायर्स होते हैं, कलरिंग एजेंट्स होते हैं। कलरिंग एजेंट्स हैज बीन लिंक्ड टू एडीएचडी। कोई भी साइकियाट्रिस्ट को कुछ बताएंगे आपको। इमल्सिफायर्स जो होते हैं ना, इमल्सिफायर, वो आपके गट के जो प्रोटेक्टिव अंदर एक लेयर होता है, आपके इंटेस्टाइनल लेयर ऊपर एक म्यूकस करके लेयर होता है, उसको ये इमल्सिफायर जो एजेंट्स होते हैं प्रिजर्वेटिव्स में, इमल्सिफायर्स, वो उस लेयर को बिगाड़ देते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आपके गट ने जो कभी देखा नहीं था अब सब कुछ दिखने लग गया, और जिसकी वजह से फॉरेन अटैक चालू हो गए। हमको लगता है कि भाई फॉरेन बॉडी का अटैक हो गया, पहले कभी गट ने देखा नहीं था क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर था, थिक लेयर, बट अभी वो लेयर हटा दिया हमने बिकॉज़ ऑफ दीस प्रिजर्वेटिव्स, एंड नाउ वी सी ऑल दीस फॉरेन बॉडीज एंड वी क्रिएट एंटीबॉडीज एंड वी एंड अप विद व्हाट? ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीज गट से चालू होता है, यहाँ तक कि अल्जाइमर्स, देयर इज लिंक टू अल्जाइमर्स डिजीज। पता है आपको जो मेमोरी लॉस होता है ना, देयर इज लिंक टू दैट। What is substitute for oil? Why do you need substitute for oil? Oh, सब्जी बनाने के लिए ऑयल चाहिए? नहीं चाहिए, वही तो बता रहे थे, बिल्कुल नहीं चाहिए। How do you eat रोटी है? सूखी रोटी और हाँ, बस सूखी रोटी, तेल घी नहीं Can you लगाने use का, this? और रोटी की जरूरत ही कम होती है एकदम। Can you soya butter instead of oil? Soya butter? नहीं, प्रोसेस किया है वो बटर, हाँ। सर प्रोसेस चीज खानी चाहिए? नहीं। नहीं, आंसर आ गया। Start asking questions, you know the answer. Sir, I use lot of vegetarian diet. आप फिश नहीं खाते हो ना? फिश नहीं खाते? नहीं, vegetarian. जैन। तो वेजिटेरियन डाइट इज एसेंशियली होल फूड्स, प्लांट बेस्ड डाइट। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा फिश आ जाता है, थोड़ा सा बाकी की चीजें आ जाती है। इफ यू लुक एट द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ होल फूड्स प्लांट बेस्ड डाइट, मेडिटेरियन में वो होता है, प्लस वो थोड़ी बहुत चीजें ऊपर डाल देते हैं, ऑलिव ऑयल डाल देंगे, फिश डाल देंगे। मेरा प्रश्न यही है कि ऑलिव ऑयल तो ऑलिव से आते हैं और आई यूज इट। तो ऑलिव खाओ ना, आपको ऑलिव ऑयल चाहिए ना, ऑलिव से आया ना। No, you don't need it. Don't do it. It's 100% fat. It's processed. Yes. Olive, We don't get blend on it. They are also processed. but actually whole है ना? कैसे process करो? Whole olive है ना? Chemical के साथ So the point is, it's way better than olive oil, which is 100% fat. हाँ? yeah, डिग्री। So आप जो है, आपको वेजिटेबल ऑयल अच्छा होता है, डालडा घी। इंडिया में पहले डालडा बोलते थे, अभी वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। अच्छा है, वेजिटेबल्स कैसे हैं? अच्छे, तो वेजिटेबल्स खाओ। कोकोनट ऑयल, आप कोकोनट खाओ, कोकोनट ऑयल की क्या जरूरत है? ये सोया मिल्क और आलमंड मिल्क इज ओके? अगर घर पे बना रहे हो तो, बाहर से लाओगे तो दुनिया के प्रिजर्वेटिव्स है उसमें। अच्छा है आपके लिए। जो घर पे 2 दिन टिकता है, वहां पे इतने दिन टिकता है। क्यों टिकता है इतने दिन? They're putting all these chemicals which are hurting you. और ये क्या होता है ना, कोई चीज डायरेक्टली इतनी हार्मफुल नहीं होती थी, बट अगर हम क्या करते हैं, एक से गट की बात हालत कर देते हैं, दूसरे से हम एक्सपोजर करते हैं, तीसरे से कुछ और कर देते हैं, एंड ऑल हमको मेडिसिन में क्या होता है, एक चीज बताओ, एक दवा बताओ तो फिक्स द सॉल्यूशन, फिक्स द प्रॉब्लम। ऐसे नहीं होता, प्रॉब्लम की वजह भी 4-5 है, सॉल्यूशन भी 4-5 है, और सब साथ में करना चाहिए। So essentially whole foods plant-based diet is one of the biggest and most important factor। और साथ में आप फास्टिंग ऐड करो, कंपलसरी रात्रि भोजन त्याग करना है सबको, कंपलसरी नौकाशी करनी है। अगर हो सके तो फोर्सी, और हो सके तो अगर कोई जो भी आप कर सको जितना,
16-18 आवर्स का फास्ट कंपल्सरी करना है। जितना फास्ट करोगे उतना बेटर रहेगा। बट ऐसा नहीं मैं फास्ट करता हूँ एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे खाना भी चलेगा, नहीं। एक्सक्यूजेस मत बनाओ। अगर आप एक्सक्यूज बनाओगे, disease does not understand excuses, it does not understand emotions, it looks at objective facts। अगर आप ये खा रहे हो ये प्रॉब्लम में लिखो, सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ पे कोई इमोशंस नहीं है। अगर आपको एक प्रॉब्लम नहीं हो तो दूसरा कुछ हो जाएगा। भाई मेरे जीन्स बहुत स्ट्रांग है, क्या होता है ना, किसी को हर एक के जीन्स में कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। तो किसी को गट का रोग होता है, किसी को हार्ट का होता है, किसी को किसी और का होता है, किसी को कैंसर होता है, किसी को क्या होता है। एवरीबडी गेट्स डिफरेंट डिजीज, बट द root cause is the Process. नहीं आ रहा Process. आगे के स्लाइड्स नहीं आ रहे हैं रीजन, बट किंजल आंसर के आप जो है ना, तो किंजल she can answer that question. How can you make sabji without oil? आज आपने जो सांभर खाया तो मैं उसमें तेल का चौका नहीं था, किसका चौका था? चौका ही नहीं। Essentially you roast, या जैसे कि ना सब्जी में टेस्ट के लिए तेल से टेस्ट नहीं आता। आप तेल ऐसे ही खाओगे आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, तेल से टेस्ट आपके मसाले से आती है। तो आप जीरा मोहरी जो भी डालते हो, गरम मसाले या खड़े खड़े मसाले, और जनरली तड़का आने के लिए तेल नहीं लगता। गर्मी होती है तो मोहरी अपने आप तड़का देने लगेगी, राइट? तो जस्ट आपके पैन में जहाँ पे भी कुक कर रहे हो, लो हीट पे, डोंट कुक ऑन हाई हीट, लो मीडियम हीट पे डालो, पैन गरम हो, जीरा डालो, मोहरी डालो, अपने आप मोहरी तड़का देने लगेगी। तो उसके बाद आपके जो भी आप राई जीरो जो भी बोलते हैं आप, उसमें आपका जो भी सब्जी है, या फिर पानी डालो, ड्राई सब्जी है जैसे कि भिंडा है, तोरला है, तो थोड़ा सा पानी डाल दो। फिर आपका हल्दी हींग वो डाल दो। अगर आपके पास ग्रेवी वाला साग है तो डायरेक्टली ग्रेवी डाल दो। That's all you need. And then you can add your garam masala, dhana powder, jeera powder. If you want curry, आपको आदत है कि मुझे सब्जी पे curry दिखनी चाहिए, तो आप सूखा नारियल या फिर फ्रेश कोकोनट डाल दो ग्रेवी में। जैसे बॉईल होगी ना, अपने आप ऐसे लाल लेयर आ जाएगा आपका। तो किसी को खाने के बाद आप अगर बनाओगे ना, कोई कह नहीं पाएगा कि इस सब्जी में तेल है और इस सब्जी में नहीं, अनलेस कि आप बहुत तेल की 1 इंच तेल सब्जी पे जमा हो, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो उसके अलावा कोई कह नहीं सकता टेस्ट में कि तेल। आपने सांभर खाया, आपको फर्क लगा कि नहीं इसमें तेल नहीं है, कुछ अलग लग रहा है। तो वैसे हर एक सब्जी बन जाती है। और आजकल तो ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत वीडियोस, पॉलिसी इंडियन सब्जी गूगल करो, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस है, बहुत लोग फॉलो करते हैं और बहुत ईजी हो जाता है। एक बार किया ना तो 2-3 बार आपको एक हफ्ते में आदत हो जाएगी। Coconut food, the one which is comes shredded one, that one. Yeah, that is fine. Yeah. Shredded coconut, dried coconut, fresh coconut. जो आपको फ्रेश कोकोनट मिलता है, आप खुद भी कर सकते हैं। ये जो वीगन मिठाई बनाई थी कैसे बनाई थी? वीगन मिठाई कैशू की थी। कैश्यूज की? कैशू और या No milk, no soya milk, no almond. no milk. And वो एप्पल खीर जैसी थी वो। क्या बनाया था वीगन मिठाई में? एप्पल खीर था वो। वो एप्पल। So it's shredded apple था। Are you struggling with illness? The question is, are you struggling with illness? If your family members are struggling with illness, and you're giving them tons of medicine, they're not happy. Unfortunately, the kids are struggling with illness. Anytime your friend's son or daughter is also actually struggling with illness. And God forbid, before you know it, you may be the same boat. Are you waiting for some illness to happen? When I started this was a couple years. Vegan, हम लोग बहुत टाइम से Pritesh was vegan for a long time. It took me a lot of years. Last 2-3 years से मैं vegan follow कर रही थी. रोज सिखाते रहते थे मुझे, तो फाइनली घर में अग्री हुआ और vegan food सब चालू हुआ। लेकिन फिर किसी ने मुझे ऐसा कहा कि आपको लगता है ये इतना इम्पॉसिबल, इतना मुश्किल है, लेकिन आपके शरीर से नस के गैप का बाईपास होता है, तो पैर से नस निकाल के छाती में डालते। Is that extreme? Right? Then don't open your chest. Is that extreme for you? Then open your leg. Cut the vessel. Yeah. Put it here. Bypass हो गया.
एक ही वर्ड में बोलते और बाईपास। सब लोग बोलते हैं हाँ इनका तो बाईपास हो गया, इनके दो बाईपास हो गए। सच अ इजी थिंग टू से। Is that not extreme? ये खाना is extreme. And the biggest legacy you can leave for your kids is not money, your good health. आप बीमार होंगे तो आपके बच्चे आपकी देखभाल करने में उनका जीवन जाएगा या सुख शांति से अपना जीवन जी पाएंगे? आप ही सोचिए। So, can you preserve when you're making that masala? Can you preserve for more than a week, 10 days if you Yes. freeze it Why in the not? refrigerator and then you do it? You can, but But some the video showed that that you're making so much of it, so you can preserve it like little cubes of it and put it in the refrigerator. you can जो भी है, but generally ये whole food में आप सबसे मिनिमम कुक किया तो भी चलेगा। आप सैलेड्स में भी अच्छे से मील कर सकते हैं। Have a protein जैसे बीन्स आप खाते हो, छोले खाते हो, generally that makes a full meal. तो आपको बहुत कुकिंग की जरूरत है। कुकिंग से न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। बहुत लोग तो जितना रॉ खा सकते हैं उतना रॉ खाते हैं। So cooking the yes, you can freeze. Nothing is spoiled, right? The masala. The masalas also you can do lots of things. 12 different times that was. So are you suggesting avoid soya milk, almond milk, rice milk, all kind of You milks? can have that. As long as you make it at home without I- preservatives. I- Very easy to make it at I home. did make a soya milk from the soya beans. Very easy. Yeah, I know that. आप उसमें तो whatever you Yeah, can, yeah. right? Not yogurt you can make. See, but again, these are still a little bit processed, heavy processed to minimize it. Major part of your diet has fruits and veggies. Major part. Or you feel, and I'm glad you're asking this question, is it practical? That means you're actually thinking, giving it a thought. कभी भी कोई भी चीज पहले यत्नशील होती है, जैन धर्म में कहा कोई भी चीज पहले यत्नशील होती है, बाद में सहज हो जाती है। आप गाड़ी चला रहे थे, स्टार्ट में जब आपने गाड़ी ली, you look at the lane, you have to turn, you have to look in the rear view mirror, side view mirror, right? You have to adjust the gears, you have to look at who's coming from left side, you have to follow the laws, you have to look at the signs, you have to look at the light. इतनी सारी चीजें थी, बस मुझे रास्ता देखना है क्योंकि इतनी सारी चीजें थी। अभी आपको बोला था बातें करते 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 घर पहुंच जाते आपको पता भी नहीं। पहले कितना मुश्किल था स्टार्ट किया था। Same thing with this. It's always hard when you start, but it will take no more than a week or maybe a month to get used to it, and then you start enjoying it. इसमें taste है, ऐसा नहीं कि you will be deprived of taste. हमको taste तो बहुत पसंद होती है। You will not be deprived of taste. You will get plenty of recipes out there. इतना literature available है, इतना data available है, एक काम का option नहीं। How not to diet बहुत अच्छी बुक है। बहुत टेस्ट की होल फूड्स प्लांट बेस्ड की रेसिपीज है फॉर डिजर्ट, जिसको लगता है कि स्वीट के बिना कैसे चलेगा, हाउ नॉट टू डाइट, बहुत अच्छी बुक है, राइट? प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज आउट देयर। What is the name? हाउ नॉट टू डाइट, How not to die. हाउ नॉट टू डाइट, Oh, How not to diet? how not to diet. So essentially you can pamper your taste buds, you can pamper your taste buds and still be whole foods plant based. you said that you make your own milk, almond milk, soya milk. Is it that simple? Yeah, you can make it, you can buy the soya beans and you can make it. My son makes it. He makes it from the soya bean. That's right. Soya bean मत बनावे। First of all, you don't need it. पहले तो ये हमारे दिमाग में नाम की ठीक थी। अभी चलो ठीक है, आपको आपसे बन नहीं रहा है, right? So hold on for a second. एक सेकंड, quiet. Everybody listen. अगर आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है और एकदम से मेरे से नाश्ता छूटेगा नहीं, एकदम से मेरे से छूटेगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हो? चलो आपने बाय कर लिया, ओट मिल्क बाय कर लिया या तो सोया मिल्क बाय कर लिया, बट रिमेंबर इट्स अ ट्रांजिशन फूड, कि मुझे ये भी छोड़ना है, बट उसके पहले डेयरी बहुत वायलेंट है, डेयरी बहुत हर्टफुल है, डेयरी में मुझे बहुत ज्यादा नुकसान है, इसके लिए मैं कम नुकसान वाली चीज अभी कंज्यूम कर रहा हूँ, but I will quit that too. With and in the meanwhile, while I'm consuming that, I'm planning. What are my alternatives? मुझे क्या करना चाहिए? Intermittent fasting करना, उसका क्या आंसर जरूरी नहीं है, सीधा 11 बजे खाऊंगा। You will start thinking, ये मैं फूस खा सकते हो। I can do so many different things. Once you start looking into it, you will start identifying solutions. तो ट्रांजिशन फूड करके कॉन्सेप्ट होता है, तब आप ये जान के खाओ ये भी मुझे छोड़ना है, बट तब तक कि मैं ये, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ठीक है, पर मत ऐसा मत करना कि सोया मिल्क, तो कहा था कि डॉक्टर मुथा थे, उन्होंने कहा कि सोया मिल्क ठीक है, एक साल बाद
स्वामी पी रहा है, हमने दूध छोड़ दिया, दवा अभी भी खानी पड़ रही है, आपने जो बताया कुछ फर्क नहीं पड़ा, दवा तो अभी भी खानी पड़ रही है, ऐसा मत। Get your concepts right, get your goals clear. Now create a pathway to reach there. Some people can do it right away, some people will need some time, that's okay. As long as you know what is right, where do I want to reach, then work your way towards it. And it is possible in today's day and age. आज तो यार आप सब लब्धिधारी, लब्धि किसको समझती है? What is लब्धि? कितनी गौतम स्वामी को कितनी लब्धियां थी? Gifted. हाँ? Gifted. Gifted. कितनी गौतम स्वामी को कितनी लब्धियां थी? अनंत थी। कोई बोलता है special power. अनंत बहुत से लब्धियां थी. लब्धि means special power, right? You guys all have special power. How come? You guys all have special power. Born Jain. You spend lot of time on your special power every day. Your special power. One click and all the answers are right there. Peripheral brain भी बोलते हैं हम इसको. Essentially आपको जितना जो भी आंसर चाहिए कि ये कैसे बनाया, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, आप गूगल पर आए. टाइम हो गया है, किसी को जाना तो चले जाना, प्लीज डोंट वेट ऑन माय अकाउंट. ये तो क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, चलते रहेंगे. बट द पॉइंट इज सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और आपके पास तो इतनी जबरदस्त लब्धि है जो कुछ 15 साल पहले भी किसी के पास नहीं. आप सब लब्धिधारी हो, आप सब पावरफुल हो. You have all the knowledge in the world. You don't have to carry it in your brain. You can just click one, push a button, and you will have the answer. इस पे तो सब अग्री करते हैं ना? Yes. कौन यहाँ पे फोन यूज नहीं करता, बताइए. मुझे पता है मेरी मम्मी बहुत कम यूज करती है फोन, ढूंढना पड़ता है फोन, कभी व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भेजो तो वो देखेगी भी नहीं. बट ऐसे बहुत कम लोग. But fortunately, I can tell her what she should do, and she is very good listener. She taught me lots of things. I can tell her what to do now. She listens to me. Question: personal experience says that fasting से सब numbers अच्छे रहते हैं. Absolutely. तो खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो moderation में? क्या? जो भी oil वगैरह. अच्छा, moderation. Everything in moderation. Confucius said everything in moderation. Fasting keeps all numbers good. Fasting is good. अभी अब मैं आपको बताता हूँ. Don't take it personally. Cyanide moderation में खा सकते हैं. Poison. वो खाने वाली चीज नहीं है. अच्छा, ठीक है. अभी जो हार्मफुल चीजें होती है, एक्सट्रीमली हार्मफुल चीजें, वो मॉडरेशन में खा सकते हैं. जो डेंजरस चीज है वो जीरो खानी चाहिए और जो अच्छी चीज है वो मॉडरेशन में खानी चाहिए. क्योंकि अगर हम अच्छी चीज है दैट इज गुड फॉर मी, जैसे नट्स अच्छे, मैं भर भर के नट्स खाऊं, इट्स नॉट गुड फॉर मी. खाना है तो वॉशिंग मशीन जब खाते हो आप, वॉशिंग मशीन जब लगाते हो वॉशर, you never fill it up completely, right? You leave some room in there. Why? Because you need. But खाना खाते हो क्या करते हो? कोई कनेक्शन ही नहीं है कि भूख लगी है कि नहीं, बस खाना आ गया है दे दो. कभी पूछा है कि सच्ची में मुझे जरूरत है, सारी चीजें टेबल पे, खाना जरूरी है? अरे भाई पूछो जरूरत है कि नहीं. अगर भूख नहीं है तो क्यों डाल रहे हो? नहीं एक्स्ट्रा है, वेस्ट हो जाएगा. अरे भाई खुद के पेट को क्यों कचरे का डब्बा बना रहे? जो चीज कचरे में जाने वाली थी वो अंदर डाल दी, खत्म ना हो जाए, और हमने क्या किया, पेट को. कनेक्शन ही नहीं है यहाँ पे कि जितनी भूख उतना ही खाना. सो नो, मॉडरेशन इज नॉट द राइट आंसर. मीट खाने वाले भी यही बोलते हैं, मीट इज अ कार्सिनोजन होता है, मॉडरेशन खाना चलेगा. जितने सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, कितने सारे कार्सिनोजन होते हैं, मॉडरेशन खाना चलेगा? खाने वाली चीज है, नॉन कार्सिनोजन. It is a known carcinogen. जब WHO ने डिक्लेयर किया है, अल्कोहल मॉडरेशन में चलेगा? अल्कोहल मॉडरेशन में? एक घूंट अल्कोहल का मैंने वहां पे बताया था, लिस्टरीन में जितना अल्कोहल होता है उतना अल्कोहल अगर आप पीते लेते हो for 8 hours, it will make sure that cancer cells grow in your body. 8 hours तक इस पे स्टडीज हो चुकी है. इतना सा मॉडरेशन में चलेगा? अरे भाई अगर आपका पायलट जो आप फ्लाई करने वाले, यहाँ से आप कहीं पे फ्लाई करके जाने वाले, आपका पायलट बोले मैं सिर्फ एक शॉट लूं, आई वोंट टेक मच, तो मुझे वो फ्लाइट लेनी कि नहीं लेनी? ये पायलट moderation is not the answer. That's a way to confuse you. Eat healthy stuff in moderation. Don't overdo healthy stuff. Unhealthy, but fasting absolutely must है. सिर्फ एक करेंगे और दूसरा नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स तो रहेंगे. हाँ, स्लो डाउन होगा स्पीड, प्रॉब्लम्स तो हो 100%.
इसके बहुत कई सारे I can keep on talking. There are these tribes. There is this tribe in Africa जो एकदम बॉडी बिल्डर लोग होते हैं, आदिवासी है और ऐसे टॉल ब्रॉड मस्कुलर होते हैं, राइट? एंड उनका मेजर डाइट इज प्लांट बेस्ड, मेजर डाइट. बट दे रियलाइज्ड बाय द एज ऑफ 60 और 65 ऑल ऑफ देम आर डेड. आप देखेंगे तो बैठे चलते हैं, सन में होते हैं, जब भूख लगती है तब खाते हैं, कुछ करते हैं, बहुत सारा प्लांट्स खाते हैं, सब कुछ, मतलब एक्सरसाइज भी हो गई, सनलाइट भी हो गई, ब्रीदिंग भी अच्छी है, सब कुछ. व्हाई दे डाइंग एट 60 and 65? They did autopsy on them. What did they find? The heart arteries were full of these blocked fat. पूरा जो ब्लॉक कर रहा हूँ. फिर पता चला उनके डाइट में दूध बहुत है. तो मतलब दिखने में हेल्थी, मस्कुलर, हम क्या कहेंगे जिम जाता है बंदा मस्कुलर है एकदम, नहीं. कितने लोग ऐसे होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, नंबर्स आर परफेक्ट प्रिस्टीन, यहाँ तक कि कोई स्ट्रेस टेस्ट भी करके आता है, और घर पे आके क्या हुआ? Heart attack and death. Are the numbers telling a true story? Numbers high है, so definitely we have a problem. But numbers normal है, और अगर आप अंदर कचरा डाल रहे हो, you see the more details. Don't be fooled by numbers. हमारे टेस्ट हमको सिर्फ, हाँ हम कहेंगे 10 साल बाद यार हमारे जो पहले के टेस्ट थे वो गलत थे, तब हमको लगा वो सही थे, पर हमको पता चला कि if you measure it this way then you realize there's a problem. Are we going to wait for the science to advance to tell us that this is the problem? So we're going to fix the नल को बंद करना है कि नहीं, ये सोचो. नल को अगर बंद करोगे तो ये प्रॉब्लम को कभी आएगा नहीं, ये प्रॉब्लम. I know it's a little bit of a shock to hear this, but this is truly a genuine direct, and this is truly a way to reverse diseases. If you have diseases, if you want to reverse diseases, or if you want to avoid getting disease. If you're not in any of these boards, then you're fine. What do you do when you travel? देखो ट्रैवल करते वक्त फ्रूट्स आपको हर जगह मिलेंगे, ऐसी कोई जगह फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, हर जगह फ्रूट्स मिलेंगे. आप नट्स लेके जा सकते हो खुद के साथ, राइट? सैलड आपको सब जगह मिल जाएगा, यहाँ तक कि आप अपनी इलेक्ट्रिक गैस भी लेके जा सकते हो, आप ठेपला बना के लेके जा सकते हो. There are plenty of options because I do travel. I'm a physician. I go for conferences. हाँ, तब इस टाइम पे आपने थोड़ा बहुत तेल की कुछ एकदम मिनिमल आप कभी कभी कर रहे हो, सो तब आप एकदम हेल्दी हो गए हो, तो आप ओकेजनली चीट करते हो, 1-2 महीने में थोड़ा बहुत तेल ले लिया, तो चलो ठीक है. नाउ यू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ओनली ऑन सम ओकेजन. बट अगर आप देखोगे तो उसकी भी जरूरत नहीं. आप सोच लो, आप में से किसने नियम लिया है, पंचकाम नियम लिए कि मैं कर्मूल त्याग का नियम है, या तो इसका नियम है, उसका नियम है. कितने लोगों का नियम है, कुछ ना कुछ नियम लाइफ में, काफी लोगों को. आपको पता है लाइफ में नियम होगा, कोई भी परिस्थिति आप नियम तोड़ते हैं कभी? नियम की ताकत कितनी है सबको पता है. जैन धर्म में तो स्टोरीज पे स्टोरीज है, कितनी ताकत होती है. तो अगर आपने नियम ले लिया, तो आप अगर ऐसी सिचुएशन में, तो आप समझो कि आपकी परीक्षा हो रही है, और अब परीक्षा अगर आप विन करते हो तो इट गिव्स यू इमेंस रिजल्ट्स इवन इन दिस लाइफ एंड आफ्टर. सो अगर आप उस तरह से सोचोगे कि भगवान ने बताया है ये करना है मुझे, ये छूटना है, इससे मुझे फायदा होने वाला है, शरीर को भी, आत्मा को भी, अभी भी, फ्यूचर में भी, और अगले भव में भी, तो क्यों नहीं. और कषाय हमें से मुझे सब कुछ ठीक है, बट अगर ये ऐसा करते हैं तो गुस्सा, बाकी तो मुझे कभी गुस्सा, ये जो खाते हैं हम विगई, ये विकार उत्पन्न कराते हैं कषाय पर. तो आप विगई का त्याग करोगे, जो आमदिल करता है ना, जनरली उसके कषाय मंद हो जाते हैं. बाद में अगर दूसरे दिन फिर से तामसिक आहार खा लिया तो फिर से, सबके लिए अप्लाई नहीं होता है, कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता है, बट आपको इतना पता है सात्विक करके भी होता है और तामसिक भी होता है, राजसिक भी होता है, इतना सबको पता है. तो तेल तामसिक है, राजसिक है कि सात्विक है? दूध तामसिक है, सात्विक है, राजसिक है? राजसिक में आ जाता है. सारे पहले के राजा लोग थे ना, वही दूध पीते थे और उनको सारे प्रॉब्लम्स होते थे. वैसे जैना मीटिंग में आप दूध दही के ना बोल रहे हो, और the cardiologist was saying go ahead, you can have milk and Yeah. everything. So now what is the reality? So I showed you, that's why I showed you the data. You asked me to show the data. I showed the data. Now do you know the answer after that? There are, you will find people keto diet के भी बहुत सपोर्ट करने वाले हैं. आप करोगे keto diet? There are people who will say कि अल्कोहल थोड़ा बहुत पियो तो चलेगा, पियो ही नहीं आप.
सो हमें अपना ऑब्जेक्टिव साथ में रखना है। तभी मैंने जैनिज्म का एग्जांपल देके बताया, भगवान ने बताया है और अभी डेटा दिख रहा है, तो लोगों को जय कहना है कहने दो, आपको पता है। और इससे तो मैं तो एक केस दिखाई, आप सो मेनी केसेस दैट आई हैव बीन एबल टू रिवर्स फॉर्चुनेटली जस्ट बाय फॉलोइंग जैनिज्म। और कुछ नहीं किया, 12 तब मुझे जैन धर्म में, अगर आप 12 तब मैंने उन टॉक में पूरे सारे तब बता दिए थे। नेक्स्ट पे स्ट्रेस मैनेजमेंट का आज नहीं करेंगे बिकॉज डाइट पे, बिकॉज डाइट इज सच अ कोर टॉपिक। वी डिड स्ट्रेस, हर चीज का बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बट गो टू द लास्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट का हम किया था। कम है लास्ट टाइम। देखो नेचुरोपैथी करके इंडिया में वो भी सेम चीज होते हैं, फास्टिंग। एक मिनट से गो बैक टू नेचुरोपैथी साइड। नेचुरोपैथी करके इंडिया में है ऑप्शन, वहां पे भी क्या होते हैं, 5 तत्व होते हैं, राइट? वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, राइट? तो जो 5 तत्व होते हैं ना, ऐसे देखो, इसमें मतलब आकाश, फास्टिंग, फिर अर्थ, पृथ्वी मतलब न्यूट्रिशन, फोर फूड्स प्लांट बेस्ड डाइट, वाटर मतलब पानी, फिर फायर मतलब सन। अब आप लोग माइमी से हो, एलिगेटर जब खाना खाता है तो उसको क्या करना चाहिए, किसको पता है? माइमी वाले लोग। It goes in the sun, right? Yeah, it has to go in the sun, and the body temperature of that alligator must go to 65 so it can digest food. Otherwise, it gets very sick. आज ही मैंने सीखा. I learned that. You guys probably know it. You guys are local. See, animals are very smart beings. जब सिक पड़ते हैं ना, देखो फास्टिंग, हम क्या सिक है ना तो खा भाई, ब्रेड खा, ये खा, वो खा, कुछ खाएगा तो आराम होगा ना, हमें दिमाग में। और जो एनिमल when they fall sick they stop eating. ये जो एनिमल है खाना खाने के बाद सन में जाता है, हम लोग है ना कितने दिनों से सन देखा ही नहीं, मायावी में रह के सन नहीं देखा, कैसे? सन इज एब्सोल्यूट मस्ट, उसके तो इतने बेनिफिट्स है। अगेन एवरी सिंगल थिंग ऑफ दिस इज अ समरी, ईदर यू टेक माय वर्ड फॉर इट और यू गो एंड रिसर्च फॉर योरसेल्फ। मैंने एक पॉइंट तो आपको कंफर्म कन्विंस कर दिया ना कि दूध में तकलीफ है, दूध के प्रॉब्लम है। किसी को कोई डाउट है अभी भी दूध में? अच्छा, सो सन थेरेपी और प्राणायाम योगा इज एयर, प्राणायाम योगा इज एयर। सो 5 तत्व अगर आप करोगे तो they claim that you can reverse major illnesses and I 100% agree with that. So next slide. And they have done it, multiple patients over and over. So essentially, 6 pillars of lifestyle medicine are the recipe to reverse diseases, but 6 pillars are nothing but 12 तब जो जैन धर्म में हजारों लाखों सालों से बताए गए, कुछ नहीं बट। और तब पचखान लेने के बाद ही करना जरूरी नहीं है, आप प्रैक्टिस चालू कर सकते हो, बाद में पचखान लो तो और भी सही, एकदम सही। एक हो पाए तो 12 तब ये याद रखें, 12 तब। इसका जो वीडियो आ जाएगा मेरे टॉक का, तो just listen to it and how I explained all these steps are related to these pillars of lifestyle medicine. और तब स्ट्रेस का भी जो टॉक है उसका भी वीडियो आ जाएगा, तो आप देख लेना, राइट? अभी रिसोर्सेज कुछ क्या आप कहोगे कोई सब कुछ ठीक है, बट डे टू डे मुझे करना क्या है? सो दे गो बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड। It's not one, it's stuff. So उसमें मैंने कुछ resources रखे यहाँ पे। There are certain websites that you can browse through if you have questions about diet, lifestyle, whatever. If you have questions about resources, जैसे there is a app called Daily Dozen. Tells you 12 things you should do on a daily basis. कौन से categories के food कितने servings में खाने हैं वो बताएंगे आपको. So you can track it every day. Categories बताते हैं, उसमें आप choose कर सकते हो मुझे आज क्या खाना है, आज क्या नहीं खाना है. Then there is a website called nutritionfacts.org. And there is another website called PCRM.org. There is another website called wellcure.com. बहुत सारे resources available हैं. कहा ना लवली धारणी है, one of the fortunate beings. because लोगों ने इतना काम कर रखा है, उनको कुछ जाके कुछ reinvent करना नहीं है. Have to follow their footsteps. People have reversed all sorts of illnesses. There are stories after stories. So many, and data is published in amazing journals. ऐसा नहीं है कि डेटा पब्लिश नहीं है, बहुत सारा डेटा बहुत पब्लिश्ड है इजीली. I read the book of Dr. Hornies.
Doctor will undo it. Yeah, repair heart without surgery. That's right. And he's practically he's suggesting ambil ka khana. That's right, which is what we discussed. Absolutely right. Dr. Esselstein, Cleveland Clinic वाले, he's reversed ऐसे disease heart के जिसको डॉक्टर ने बोला घर पे जाके अभी कुछ महीने बचे बाथरूम तक नहीं चल सकते थे 17 साल बाद they were alive and kicking, they were doing everything only on go after going on these and not everybody gets this chance. ऐसा नहीं है कि अगर मुझे illness आ गया तो मैं देखूंगा. Not everybody gets that chance. कितने लोग हमको पता है अभी क्या हो जाएगा मैं आखिरी he did not get second chance. And you hear a lot of people dying in their 30s and 40s. या तो irreversible illness हो जाता है कि उसमें बाद में डाइट से आप improve कर सकते हो पर resolve नहीं कर सकते. तो हमें उस मोमेंट की राह नहीं देखनी. You have to start taking initiative right now. Okay? ये बाल कैसे काला अगर आप हमारे पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि हम वीगन बनते हैं है ना थोड़ा हम वीगन फॉलो करते हैं हमारे बच्चों को वीगन का फॉलो करवा रहे हैं then तुम बहुत समझदार हो गए हो ऐसा कुछ होता नहीं है तो इम्पोर्टेंट है लाइक वो कभी वेजिटेरियनिज्म में वीगन डाइट का इतना प्रमोट किया गया या महाराज साहब ने यहाँ उनको भी कन्विंस करना Let's take one step at a time. पहले हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं जैसे करके हम पूरा कर रहे हैं. Start doing that. Let them see the difference in you. Let your actions speak, not your words. अगर आप 100% करोगे, you would be surprised कि आपको पता ही नहीं था कि आपको कितना खराब फील हो रहा था. You would feel so much lighter, so much more energetic, so much more energy. आपकी नींद रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. Overall, you will make progress on every single aspect of your life. You will be some amazing. See, आप करो पहले, implement करो, you show them. And जब आप छोटे थे, तो आप कितना मानते थे अपने पेरेंट्स को? नहीं मानते थे. उन्होंने आपको प्यार करना बंद किया, उन्होंने आपको गाइड करना बंद किया. कहते ना they the same. By the time I realized my father was right, my son thinks I'm wrong. Right? So this is what happens. It's generational thing. That's okay. So हमको उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना है. 1000 बार बोलो ये सुनेंगे नहीं. That's okay. Keep loving them, but you keep doing the right thing. Become an example, and you will be amazed. You know, there is slow progress. Slowly but surely, you will start seeing. There'll be a process. अभी मैं जैन के एग्जांपल लेंगे आपको. तभी तो भागवत में बांधते हैं तो maybe they may not think it's vegan may be homemade or अच्छा सुनिए आप. वो बात है.